Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's take a look at some stories from this week's episode. Floods continue to wreak havoc in illegally occupied Gilgit, Baltistan. Gilgit-Baltistan administration cracks down on people protesting against wheat subsidy cut. Authorities in J&K are working towards the development of sports fields and grounds. Government hospital in Rajouri provides relief to poor people with multiple facilities. And later in our section of Incredible India, we'll take you to witness Ganesh Chaturthi festival all over India. Floods continue to wreak havoc in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Many low-lying areas have submerged and people are in a state of distress. Even in such a disastrous situation, authorities have failed to provide the necessary help. Have a look. The demolished houses, ravished trees, debris flow, bridges collapsed, and the helplessness of locals. This is the picture of Jalalabad village in illegally occupied Gilgit-Baltistan, where torrential rains and flash floods have inflicted havoc. Even when people have nowhere else to turn for shelter, they are compelled to leave their homes because they are either underwater or could collapse at any minute. Amid all this, when people are in immense grief due to loss of life and property, authorities have failed to take necessary measures. लोग दोनों तरफ में फंसे हुए हैं, ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। तकरीबन दिन के अंदर 600 से ज़्यादा घराने मौजूद हैं और इनका जो इकलौता पुल है राबिता देन और चटोरगंज के दरमियान राबिता के लिए, ये पुल मुकम्मल तौर पे जाम हो चुकी है, बंद हो चुकी है फ्लड की वजह से, और इनके पास अल्टरनेट कोई ऑप्शन भी नहीं है इस पुल के अलावा। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रैफिक सारी जाम बंद हो चुकी है, लोग भी फंस चुके हैं। हुकूमती ज़िली इंतज़ामिया से हम अपील करेंगे कि वो जल्द अज जल्द इस फ्लड को डाइवर्ट करने के लिए इक़दाम करें। The main bridge connecting Jalalabad to other areas has collapsed, making it difficult for people to commute even for medical emergencies. There are 600 households in this village. People here are not getting food and clean water. People are requesting the authorities to provide supplies to the flood-affected people, but their plight doesn't seem to bother them even a bit. गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ फ्लडिंग का सिलसिला जारी है, ताहम जारी है। तो अगर नुकसानात का हम एक कैलकुलेशन यानी एक रैंडम अगर चीज़ बता दें तो कम से कम करोड़ों से ऊपर के नुकसानात हैं। इस वक्त हमारे पास जो जलालाबाद टू फैज़ाबाद और जलालाबाद टू होटलती जो लिंक करते थे दो पुल, वो मुकम्मल डैमेज हैं। उसके साथ उनके बराबर में अंडर कंस्ट्रक्शन पावर हाउस था, नया जो हमारा पावर हाउस बन रहा था, वो भी तकरीबन डैमेज है। उसके बाद जो हमारा पुराना पावर हाउस था, जिससे मतलब यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से बिजली की तरसील थी, तो वो उसका जो वाटर चैनल है, सरबंद है, वो भी मुकम्मल डैमेज है। It's not the first time that floods have hit the region. Almost every year, the same situation arises. But even then, the authorities have made no learning. The melting of glaciers is one of the consequences of the environmental degradation rampant in the region.
While floods have battered life across illegally occupied Gilgit-Baltistan, the hike in wheat prices have made things worse. People in the region are continuously protesting against the cut in wheat subsidy, but instead of resolving their issues, the administration has resorted to use force against the protesters. We have a report. Anger is at its peak among the people of illegally occupied Gilgit-Baltistan. At one side, they are boiled over the subsidy cut on wheat and tax hikes. On the other side, they are simmering in anger against the government for stopping them from demonstrating. Recently, when Awami Action Committee in Gilgit erected tents to hold a protest, the administration brought them down in an attempt to muzzle their voices. अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी जलसा जो कि आज इत्तेहाद चौक में मुनक्किद होना है, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर गिलगित और असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित को बाकायदा तौर पे दरख्वास्त के जरिए ये आगाह कर दिया गया था कि यहाँ गंदम सब्सिडी के खात्मे और रेट के इजाफे और मौजूदा हुकूमत की जानिब से टैक्सेस के नफाज के खिलाफ इस एहतजाज के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से आज सुबह डिप्टी कमिश्नर की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर और मुतालिका थाने के पुलिस ने आके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो टेंट लगा हुआ था, जो पिंडाल लगा हुआ था, इसको उखाड़ दिया है और अवामी एक्शन कमेटी को जलसे से रोकने की कोशिश की गई है। Numerous protests against the reduction in wheat subsidies have taken place in recent months, but the residents' hardship has received little to no attention from the authorities. Earlier in 2017, the notification regarding the cutting of wheat subsidy was suspended. But yet again, it has been introduced, creating problems for the people of this region. At present, when people in Gilgit-Baltistan are already suffering due to floods, the cut on wheat subsidy has inflicted double whammy on them. हम ये आज इस मुसीबत में, इस बारिश में, इस सैलाब में आवाम परेशान है और गवर्नमेंट सेठ सपाटे कर रही है। इस्लामाबाद की तरफ जाकर वहाँ वफाकी हुकूमत ने एक और जुल्म किया है। यहाँ पर सब्सिडी के नाम पे जो हमें गंदम मिलता था उसको काट के कीमतें भी बढ़ाया है, उसको भी काटा है और उसके ऊपर तीसरी जुल्म उन्होंने ये किया है टैक्स लगाकर। तो हम आज कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हम हक बजानिब है, हम इसको एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। Having reached saturation, the people of Gilgit-Baltistan have started demonstrating intensively against the corrupt practices of the government. However, Pakistan, on the contrary, has also ensured that people in this illegally occupied region continue to reel under its misrule that provides a life riddled with discrimination and misery. And next we move on to Jammu and Kashmir, where authorities are working towards the development of sports fields and the grounds. These developments are made to encourage the youth in the valley to participate in different sports activities, especially hockey. One such development is the installation of floodlights on the grounds so that participants can play even at night. Have a look. To encourage more young people to play hockey, the J&K administration scheduled special hockey matches under floodlights on National Sports Day in Srinagar. Such night matches of hockey were organized for the first time in the valley. Both girls and boys participated with full spirit. Celebrations were done to remember Major Dhyan Chand on his birth anniversary, whose contribution to hockey was immense. आज का डे जो है वो सेलिब्रेशन है मेजर ध्यानचंद जी के एजाज में। उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हॉकी बहुत ही इमेंस रहा है। उनको हॉकी विजिट भी कहा जाता था। आज की डे पे चाहे यहाँ हो, चाहे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, बाकी स्पोर्ट्स को के साथ साथ के हुकूम में और यहाँ पे हमने नाइट मैच हॉकी का करवाया। इससे एक इम्पेटस मिलेगा हॉकी का, हॉकी के रिवाइवल का जो हमारा प्लान है कि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो नाइट में अब यहाँ पे हॉकी मैच, पास वाले पोलो स्टेट ग्राउंड में हमारा हॉकी का टर्फ लग रहा है, वहाँ पे नाइट मैच के हुकूम में ये जारी रहेंगे। हमने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं ताकि जो हॉकी हमारी नेशनल गेम है, इस सिलसिले में हमारे बच्चे और बच्चे इस खेल से वाबस्ता हो जाए।
These initiatives taken by the government will provide proper opportunities and platforms to the talented youth and encourage them to participate in sports. For the last few years, youth in the valley are performing very well in sports, especially hockey, and are enjoying it a lot. This will also help to enhance their health, reduce stress, and will keep them away from the drug menace. These players went to work hard and represent their country internationally. नाइट विजन मैच ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। इसकी वजह से जो जिन बच्चों को दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्टडीज कर रहे हैं, दिन में सुबह स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको शाम को टाइम मिल रहा है ये प्रैक्टिस में अपने आप को आगे लाने का। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं मान रहा हूँ। इसकी वजह से हम आगे बढ़ सकेंगे। दिन में तो बहुत डिप्रेशन होते हैं, लाइक कि जैसे स्कूल डिप्रेशन है, तो मतलब घर के डिप्रेशन होते हैं। जब गेम में आते हैं वो उनसे हॉकी खेल के कई डिप्रेशन भी दूर होते हैं। इस वजह नाइट डिप्रेशन जो है ये बहुत ही बेस्ट है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं। आजकल यूथ हमारे ड्रग्स की तरफ लग गया है, जो आजकल हम चाहते हैं कि हमारा सारा यूथ स्पोर्ट्स में आगे आए, कश्मीर का नाम आगे आए। Students were not able to play because of school and college during the day. With the installation of floodlights, students can now play at night. Because of increasing girl participation, many other girls are now coming forward and participating in hockey. Feedback is taken from players in order to make further developments. हॉकी तो पहले कभी थी नहीं यहाँ सर। मैंने भी खुद कॉलेज लेवल से खेला है। मेहता सर कोचिंग में खेला है मैंने भी सर। अभी ये प्रमोट हो रहा है कि आगे भी ज़्यादा हमें मिले, इसके हॉकी में स्पोर्ट मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। कश्मीर में बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है। अगर ऐसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम बहुत सारी जैसे कि हम खेल रहे हैं ऐसे भी इंस्पायर होंगे, बहुत सारी लड़कियां हो जाएंगी इंस्पायर, वो भी आगे जाके खेलेंगी। मेरे ख्याल में वैली में पहली बार हो रहा है इधर, जबकि ये नाइट हॉकी हो रही है। पहली बार हम खेलने जा रहे हैं। अभी अच्छा फील महसूस कर रहे हैं कि अभी जा रहा है। पहले फर्स्ट टाइम हमने ये खेलना है। अभी जो हमारी ऑस्ट्रेलिया जो अभी तैयार होने जा रही है, अभी कहा सर ने कहा, सर मदवी साहब ने जो हमारी ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने कहा कि सितंबर के एंडिंग तक आपको ट्रिप दे दी जाएगी तैयार होके। तो वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी देखेंगे क्या होगा। तो अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा है नाइट, बहुत अच्छा ये देख रहा है, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं भी एक्साइटिंग हूँ, मैं देख रहा हूँ, काफी एक्साइटिंग है मेरे पास। Participants want more such activities to be organized at the district level as well, so that more youngsters get benefited and adopt hockey as a career. Well, the administration of Jammu and Kashmir is always working to improve the region's healthcare system. The authorities are making every effort to transform patient care in the Union Territory, including the introduction of a healthcare investment policy and the establishment of prominent medical facilities. One such development has been made in a hospital in Rajouri that has brought relief to the people of this region. Have a look. Jammu and Kashmir is taking steps to boost its healthcare industry. The administration is taking a number of steps to guarantee that everyone has access to high quality, reasonably priced healthcare. All types of major surgeries will now be performed free of cost at the Associated Hospital Government Medical College in Rajouri. This has brought huge relief to the poor patients in the region who were referred to Jammu and other hospitals for major surgeries and have to travel long distances for that. पहले इस हॉस्पिटल में काफ़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती थी। कोई भी छोटा मोटा केस होता था तो हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता था जम्मू के लिए। अब हमें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें हमें काफ़ी तरह की फैकल्टीज़
नई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं काफ़ी सारी। इसके बाद 200 बेड का हॉस्पिटल पीछे इससे पीछे और बन रहा है। अब हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, हमें अच्छा स्टाफ मिल रहा है डॉक्टर्स को लेके, और भी कोई भी हर तरह की फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल रही हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि अब जो नेक्स्ट से जो भी यहाँ पे कोई भी केसेस मुश्किल से मुश्किल केसेस अगर होंगे, हमें यहाँ से कोई भी रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। The hospital has a multi-speciality team of doctors that can perform all types of complicated and major surgeries. Many developments have been made in the medical college and its faculties. Doctors are available 24/7 to help the patients. X-rays, laparoscopic surgeries, medicines, all equipment for surgery and much more is provided free of cost to poor people. Patients stay in ICUs until they are recovered. The team includes doctors from Rajouri and Poonch as well as from outside areas. बहुत सारे ट्रॉमा के केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के आते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट के केस आते हैं, जो कहीं से पेड़ से गिर गया है, कोई पहाड़ी से गिर गया है, इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास अभी जैसे मैंने बोला कि सर्जरी की टीम जो है वो एक्सपर्ट है, और हमारे पास सीटी स्कैन यहाँ पे अवेलेबल है। इवन प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास MRI भी अवेलेबल है। तो तमाम तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं। 24/7 उनकी हम सर्जरीज कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि ये रजौरी और पुंछ स्पेशली दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और यहाँ पे हम लोगों को लोकल्स को भी यहाँ पे काम करने का जो है मौका मिला, और इन लोगों को भी जो है वो एट पार विद जम्मू एंड श्रीनगर जो है वो ट्रीटमेंट मिल रही है। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और पूरी सोसाइटी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ पे एक तो मेडिकल कॉलेज बना, और यहाँ अपने लोग जो हैं वो अपने लोगों को सर्व कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। All these facilities are available under the Ayushman Bharat scheme, under which a person should have a golden card and will have to be registered under the scheme. Treatment in private hospitals cost a fortune, but with the development of government hospitals and many other schemes, poor people are now getting benefits. They won't have to go to far-off places for better treatment. Everything is now available in Rajouri Government Hospital. यहाँ पे रजौरी हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। पहले यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग होती थी, अब कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, और यहाँ पे पेशेंट को अच्छी तरह से रखा जाता है, अच्छी तरह से केयर की जाती है, और यहाँ पे अंदर मेडिसिन वगैरह भी पेशेंट को दी जाती है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी जो है हमें मिल रही है। तो मैं ये गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जो ये हॉस्पिटल का काम लगाया गया है ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो साथ में जो पेशेंट को केयर दी जा रही है वो अच्छी तरीके से दी जा रही है। पहले हमें जम्मू जाना पड़ता था, अब यहाँ रजौरी के बीच में आज एक टेस्ट वगैरह हालात अच्छे हैं, बारकें बन रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी और यहाँ तरक्की की जाएगी। In recent years, Jammu and Kashmir have taken major strides to boost their healthcare ecosystem. These initiatives include the establishment of 2 AIIMS, 7 medical colleges, 2 state cancer institutes, 15 nursing colleges, 150 district, sub-district hospitals and 2,209 health and wellness centers. Besides, 211 ambulances are providing 24/7 facilities in Jammu and Kashmir divisions, in addition to 286 general ambulances which are serving the people. 64 advanced life support ambulances were also inducted into the fleet to fill all the existing gaps in healthcare to save precious lives.
Moreover, the dialysis facilities which were limited to a few districts are now available in all 20. The administration is working tirelessly to correct the disparities and guarantee that residents of the territory have access to the full range of healthcare services in the primary, secondary and tertiary care sectors. Next, we move on to our section of Incredible India, where today we will show you celebrations of Ganesh Chaturthi, one of India's most well-known and auspicious celebrations, which is the ideal fusion of vitality, culture and history. It is a highly anticipated holiday celebrated in honor of Lord Ganesha, the Hindu god of wisdom, and is especially popular in the south and west of the nation. See how Indians celebrated Ganesh Chaturthi this year with pious zeal and artistic flair. Hundreds of thousands of devotees across India throng temples to celebrate the birth anniversary of the Hindu elephant god Ganesh as they offered prayers to the deity of prosperity. Ganesh Chaturthi or Vinayak Chaturthi is celebrated in honor of Lord Ganesh, who is considered the deity of prosperity by Hindus. The festival is majorly celebrated in the western and southern parts of the country. साल के बाद मंदिर चालू होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं। हमें 2 साल से कोविड के वजह से हम बाप्पा के पास नहीं जा सकते थे, पर अभी हम खुद ब खुद बाप्पा से मिल सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने मन की हर एक इच्छा बाप्पा से पूछते हैं, हम बाप्पा उनकी पूरे करते हैं हमारी इच्छा। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम गणपति का त्यौहार बाप्पा को फूल चढ़ाकर प्रार्थना कर उनके पैर पड़कर उनकी हर इच्छा पूरी करके हम अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हैं। हम लोग वो हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है बाप्पा से बात करके। The western Mumbai city saw a sea of devotees offering prayers to an idol of Lord Ganesha as the priest performed rituals and aarti at the Siddhi Vinayak Mandir. Worshippers pray to Lal Bagh Raja, which is a large Ganesh idol at Lal Bagh in Mumbai. People here can also place an online order for prasad. Police personnel welcomed Police Bappa at Villepalli police station in the city. Wearing a khaki uniform, the Police Bappa holds a mobile phone in his hand. The purpose behind bringing Police Bappa is to create awareness about cyber fraud. Meanwhile, Hyderabad city celebrated the day with a giant-sized idol of the deity. The largest idol is installed at Hyderabad's Khairatabad. मेरा पुलिस बाप्पा लाने का कंसेप्ट ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाने का, फिर वो क्राइम के बारे में रहे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में रहे, और इस बार हमने लाया है वो साइबर फ्रॉड के बारे में। जो साइबर फ्रॉड ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे या लोग उसमें जो फंस रहे जैसे, तो उनको सावध करने का मेरा बाप्पा इस बार प्रयास कर रहा है। और उसके लिए उसने एक मराठी में गाना लाया है, सावध रहा, और उस गाने के थ्रू बता रहा है कि कैसा तुम्हारा फ्रॉड होता है। In Guwahati, women also took part in the procession with great enthusiasm. They were seen walking with earthen pots on their heads. Devotees were seen waiting in queues to offer their prayers to Lord Ganesh. School children in Muradabad created rangoli from natural colors and flowers to celebrate Ganesh Chaturthi. बहुत अच्छा लगा। सुबह को 5:30 बजे आया हूँ। एक्चुअली बहुत लाइन है, लंबा लाइन है, फिर भी बहुत पीसफुली सक्सेसफुल हुआ है। बहुत अच्छा लगा। सब लोग इतना
अच्छे तरह से पूजा करने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा है। बहुत एनवायरनमेंट भी अच्छा है, आज क्लाउड भी अच्छा है। Women in Indore made small Ganesh idols from chocolate and decorated them. In Chennai, large Ganesh idols were made of spears and coconut. People offered fruits and prasad to the deity. At the Puri beach in Odisha, sand artist Sudarshan Patnaik sculpted a statue of Lord Ganesh out of 3,425 sand laddus. इस बार मोदी जी का आज़ादी महोत्सव चल रहा है और साथ ही साथ क्रिकेट मैच भी चल रहा है, तो उसी की थीम पे हम लोगों ने गणेश जी बनाए हैं इस बार। मैं 4 साल से चॉकलेट के गणेश जी बना रही हूँ और हम लोग हर साल इनका विसर्जन दूध में करते हैं और उस दूध को हम लोग गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Every year the festivities go on for 10 days, and on the last day the idols are taken through the streets in a procession and immersed in a river or the sea. This Visarjan symbolizes the seeing off of Ganesha's journey towards his abode, taking away with him the misfortunes faced by mankind. That's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.